Inflation is always the matter of concern for economy, and if you go through the history of inflation has generally inflation is said that a continuous rise in prices. इन्फ्लेशन का जो उल्टा होता है, द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन. 1929 अमेरिका हैज सीन एंड दैट वाज ग्लोबल रिसेशन स्टार्टेड. आज हम भारत के इकोनॉमी के एक सिनेरियो की बात करेंगे. फूड इन्फ्लेशन लिमिट्स चॉइस बिफोर आरबीआई. ये एक रिपोर्ट है. रिटेल इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI for February was on expected lines at 5.1%. There are two parts to the inflation story. While core inflation, it measured the non-food, non-fuel part of the CPI basket, continues to soften. Food inflation is keeping the headlines number elevated beyond RBI's target range. Core and food inflation stood at 3.4% and 8.7%. मतलब फूड इन्फ्लेशन जो है अभी हाई है, काफ़ी हाई है, 8.7%. मॉडरेटली कहा जाता है कि मॉडरेट जो है इन्फ्लेशन हमेशा अच्छा होता है, जो कि सप्लायर को, प्रोड्यूसर्स को एक इंसेंटिव्स की तरह होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए. लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. और जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब बन जाता है. इन फरवरी इन फैक्ट द फूड पार्ट ऑफ द प्रिंट हैज़ एक्चुअली सीन अ मार्जिनल राइज बिटवीन जनवरी एंड फरवरी बिकॉज ऑफ अ फास्टर ग्रोथ इन मीट एंड वेजिटेबल प्राइसेस. तो ये उसका कारण था. विल फूड इन्फ्लेशन मोमेंटम स्लो डाउन एनफ टू ब्रिंग द हेडलाइंस नंबर क्लोज टू द RBI's टारगेट ऑफ 4% गोइंग फॉरवर्ड? The answer to this question depends on the vagaries of climate more than anything else. मतलब भारत की कृषि मानसून आधारित कृषि है और जब भी मानसून, ये देखा गया है कि जब भी मानसून अच्छा होता है एग्रीकल्चर तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हमारा इंडस्ट्री भी अच्छा हो जाता है, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाता है. तो इसलिए इस पर मानसून पर अभी भी उसी की वकालत की जा रही है कि उस पर डिपेंड करता है, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है. वाइल द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट has been proactive in preempting shortages in food markets, there are limits to how much such interventions can control food prices. Monetary policy, दो तरह की पॉलिसी हम यूज करते हैं इकोनॉमी में, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी. जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सब्सिडी की जो पॉलिसी अपनाती है बजट के माध्यम से, वो हमारी फिजिकल पॉलिसी कही जाती है. और जो RBI फॉलोअप करता है कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी को, वो है मॉनेटरी पॉलिसी. तो यहाँ पर हम RBI की पॉलिसी की बात कर रहे हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इट्स ओन कैन डू वेरी लिटिल टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन. दिस इज अ पॉलिसी डायलेमा दैट इज बिकमिंग entrenched in the Indian economy. Its magnitude could come down, the share of the food basket is reduced. What does this mean for the economy going forward? Nobody expects RBI to cut interest rates when the Monetary Policy Committee MPC meets next in April. The headlines numbers staying unchanged suggest that the MPC's Monetary Policy Committee tone will also remain the same. While some members of the MPC have been talking about the cost of a prolonged higher real interest rate environment for consumption and investment, a strong growth performance in the December quarter may likely have made the MPC temporarily immune to such concerns. तो ये आज हिंदुस्तान टाइम्स में निकला हुआ था, तो मैंने कहा कि ये इकोनॉमी से संबंधित है तो थोड़ा सा इसको पढ़ लिया जाए. थैंक यू.